सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ीर खान आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम को पाबंदी से देख रहे होंगे। नाज़रीन, दुनिया भर में पाकिस्तान से निकले हुए पाकिस्तानी नाम पैदा कर रहे हैं अपने वतन का, मेहनत कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अपनी भी खिदमत कर रहे हैं और वतन की भी खिदमत करते हैं। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ये वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान से हकीकी प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो। नाज़रीन, ये वो पाकिस्तानी है जिनमें अहलियत है, काबिलियत है, शऊर है कि वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है हुकूमत पाकिस्तान का कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे नज़र रखें और उन लोगों को तलाश करें जो पाकिस्तान आके पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। नाज़रीन, आज एक ऐसी स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ह्यूस्टन से। आपको टेक्सास से बहुत से लोग हैं, बड़े शानदार काम कर रहे हैं टेक्सास में। वहाँ पे गैस स्टेशन ओनर्स भी हैं, ऑयल रिग्स वाले भी हैं, ऑयल फील्ड वाले भी हैं, मेडिसिन वाले भी हैं, सी स्टोर वाले भी हैं, लातादार पाकिस्तानी बाद हैं। ह्यूस्टन कॉल मिनी पाकिस्तान। नाज़रीन, तो ह्यूस्टन से बहुत दूर नहीं लेकिन इतना भी करीब नहीं, वहाँ पे पाक फूड LLC का एक हेडक्वार्टर है और उसके CEO चेयरमैन है जनाब तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब का ताल्लुक सियालकोट से है। उन्होंने ये सफ़र एक गांव से किया और अमेरिका पहुंचे। कहते हैं कि गांव से गौर होने तक। आइए हम सब मिलकर मुलाकात करते हैं जनाब तनवीर अहमद साहब से। मुलाहिज़ा फरमाइए ये खुसूसी रिपोर्ट।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे मिजाज है आपके? शुक्र अल्लाह का सर, खैरियत से हैं आप? सब ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाके में आप रहते हैं और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसके पीछे बहुत ही हसीन लेक है थैंक यू। जो मेरी कमज़ोरी भी है। आई लव वाटर ऑलवेज। हमारे नाज़रीन को हमेशा ख्वाहिश होती है कि जिस शख्स को मैं आज मिला रहा हूँ या मुलाकात करा रहा हूँ जियो टीवी सफ़ीर पाकिस्तान के मशहूर प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान से, कि वो कब और कैसे अमेरिका आए और कैसे हमने ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो पहले तो हमें आप ये बताएं कि आपने किस गांव में जन्म लिया, कहाँ पैदा हुए, किस स्कूल में गए, कैसे जाते थे स्कूल, कैसे तालीम हासिल करते थे, फिर अमेरिका का रुख आपने कैसे किया? मेरी पैदाइश सियालकोट में एक छोटे से गांव जिसका नाम आडा है, वहाँ पे हुई। तो प्राइमरी बेसिकली मैंने वहाँ से ही स्कूल में पढ़ा। दैट वाज अ क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल। उसके बाद जब मैं दूसरी क्लास में था तो पेरेंट्स ने यही डिसाइड किया कि इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जाए। सो दे रियली पुट मी इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द सिटी इन सियालकोट, व्हिच वाज द सिटी पब्लिक स्कूल। वहाँ से बेसिकली मेरी दोबारा से प्राइमरी से फिर एजुकेशन शुरू हुई। तो एवरी ईयर आई वाज क्लाइंबिंग अप two classes to cover it up. तो पूरे it was not very easy life at the beginning कि घर से निकल के तकरीबन आधा मील चल के बस पे जाना, फिर बस पे बैठ के आगे से टांगे पे जाना, और कभी टांगा नहीं मिला तो पैदल ही जाना स्कूल पे ना। तो इस तरीके से इन मुश्किलों से गुज़रते गुज़रते मैट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ना 8 डिवीजन में कर लिया, पास किया। इसके बाद मरे कॉलेज में गए। तो एफएससी के बाद बेसिकली पेरेंट्स की यही ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरीके से ना तनवीर को बाहर भेज दिया जाए। हालात इतने नहीं थे कि वहाँ पे ना स्टडी कंटिन्यू की जा सके। तो उसी वक्त यही डिसाइड हुआ कि अमेरिका में जाओ। वहाँ यहाँ पे मामू के कुछ कनेक्शंस थे। मामू ने यही एडवाइस दी कि आप अमेरिका आ जाओ, यहाँ पे सेटल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वर्सेस सम पीपल लाइक टू गो टू मिडल ईस्ट और सम प्लेस एल्स। So the biggest challenge we always faced in Middle East is, can you get citizenship over there? The U.S. has basically the opportunity, who offers the most amenities, the most things that you can even think of. तो यही होता है, हर इंसान को यहाँ पे सिटीजनशिप हो, वहाँ पे रहना है, कल को आगे बढ़ेंगे, अपनी डेवलपमेंट होगी। तो उस लिहाज पे आके आप यही सोचते हैं कि सिटीजनशिप के अलावा क्या आप इधर प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, अपने बच्चों का सेटल कर सकते हैं। तो दिस वाज बिगेस्ट रीज़न फॉर मी। आपके नज़र में एक बड़ी पिक्चर थी। दिस वाज द बिगेस्ट रीज़न फॉर मी टू कम टू USA, इवन दो आई कुड हैव गॉन टू UK एज वेल, बट मामू अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी एडवाइस यही थी कि नहीं तुम US जाओ। सो आई थिंक दैट्स वेयर माई डेस्टिनी वाज। दैट्स ऑल आई कैन। ख्वाहिश भी थी, कुछ ये था कि डिफरेंट सा हो। जो आपके वालिद क्या करते थे इस में? वो मोस्टली उन्होंने मिडल ईस्ट मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली एक फार्मर फैमिली से है। तो खेती बाड़ी ही दादा ने की, डैड ने भी की। जब डैडी मिडल ईस्ट में थे तो मम्मी करती थी। तो हमारा थोड़ा बहुत जो था, जो गुजारा होता था वो इसी खेती बाड़ी से ही खेती बाड़ी से ही जी। अच्छा। कितने बहन भाई थे आप लोग? हम 5 भाई थे, कोई बहन नहीं थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स। माशाल्लाह। तो फिर मैं बेसिकली जब इधर US में आया तो आई केम टू 88 में 88 में न्यूयॉर्क में आया। तो कितनी उम्र थी आपकी? 19 साल। Very young. So even though at that age I had that little vision कि I need to do something different. तो जैसे ही न्यूयॉर्क लैंड किया वहाँ पे देखा या तो आदमी कंस्ट्रक्शन में है या टैक्सी में है। So that was not something that I was really looking forward to it. लोगों का एम होता है कि मैं थोड़े से पैसे कमाऊँ,
But one thing that I had learned very quickly over there कि अगर मैं टैक्सी में गया या कंस्ट्रक्शन में गया तो बस that's it. वो लाइफ आपकी वहीं एंड होगी। वहाँ पे ना आगे बढ़ने के चांसेस बहुत मुश्किल है। तो within like 30 days I decided to leave New York City and I came to Sacramento, California. सैक्रामेंटो जी। आप खेती बाड़ी के लायक आए वो मिट्टी को खींच दी है ना। तो सैक्रामेंटो में भी जब आया तो अगेन इट वाज अ वेरी स्मॉल टाउन, डिडंट ऑफर टू मेनी थिंग्स। तो कुछ मज़ा नहीं आया वहाँ पे भी आके। तो करीबन 2 महीने रहा, स्ट्रगल रही कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। Finally, I had an opportunity to go to San Francisco area. So I ended up going to Mill Valley, it's a small town by the Golden Gate Bridge. वहाँ पे जाके मैंने एक दोस्त के साथ रहा। वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे बेसिकली ना वो एज ए वेट्रेस काम शुरू किया। इसके बाद गैस स्टेशन एंड देन माय फर्स्ट रियल जॉब वाज एट जैक इन द बॉक्स, जहाँ पे मुझे एज ए शिफ्ट सुपरवाइज़र 89 में हायर किया गया था। शिफ्ट सुपरवाइज़र I was making about, I believe, $2.65 an hour. Oh my God. And you can imagine कि उन दिनों में $2.50 भी अच्छे होते थे, बुरे नहीं अच्छे होते थे, पर आप जब ये थोड़ा सा देखें कि पाकिस्तान कॉल करने के लिए $4 देने पड़ते थे। तोता भी नहीं मिल रहा तो उस वक्त ये होता था कि आपने ना बेसिकली 2 घंटे काम किया और 1 मिनट बात की है। तो मिसिंग पॉइंट वाज कि किस तरीके से आप माँ से बात कर सकें। तो यही होता था कि यहाँ तो उनको लेटर लिखते रहो, यहाँ 2-2 महीने के बाद ना कॉल करो तो 4-5 मिनट बात करके ना सोचना पड़ता था कि पॉकेट मनी क्या है, ये पैसे सेव करके पीछे भेजे जाएं, अपने लिए कुछ सेव किए जाएं कि यहाँ के ना फ़ोन पे खर्च कर दिए जाएं। सो आई ऑलवेज हैड दैट थिंकिंग इन माइंड ना कि हाउ डू आई रियली बेसिकली ना कि इस जितने भी पैसे हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए फॉर द बेस्ट यूज़। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जैक इन द बॉक्स में प्रमोशन होती रही। फिर 92 में मेरी शादी हो गई। शादी भी पाकिस्तान में हुई। शादी करने गया शादी करने गया आपकी शादी हो गई 92 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद बेसिकली थोड़े दिन ही रहा, वापस आ गया। 93 में मेरी बेटी सना पैदा हुई और फिर 95 में मेरी मिसेज और मेरी बेटी इधर यूएस में आ गया। तो उन दिनों तक मैं बेसिकली यही था कि जैक इन द बॉक्स से फिर मैं KFC में काम शुरू कर दिया। वहाँ पे एज ए एरिया मैनेजर बना, फिर HR डायरेक्टर बन के तो देन आई वाज शिफ्टेड टू टाको बेल में थोड़ी देर काम किया एंड देन आई डिसाइडेड टू लीव। कुछ हालात इस तरह के पैदा हो गए कि मुझे फास्ट फूड छोड़ना पड़ा। अच्छा। उस वक़्त यही ज़हन में आया कि किसी तरीके से ना पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। I was so disheartened. डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंचे आप, दैट्स अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट। But then there were some circumstances happen कि ना वो उन्होंने जॉब वो eliminate भी की। Then it was not, I think that was probably one of the worst period of my life. तो उस वक़्त यही मैं सोच रहा था कि ना अगर पाकिस्तान जाके ना तो वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। But thanks to my wife, उसने मुझे सहारा दिया उस वक़्त। उसने यही बोला कि नहीं, आप नहीं जाओगे, अगर आपने जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा रही। तो बड़ा अच्छा आई थिंक उसका बहुत ही इट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट कि बीइंग अ वुमन, इफ शी इज़ दैट स्ट्रॉन्ग, शी कैन सपोर्ट मी, देन आई मस्ट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो द क्रेडिट रियली गोज टू हर। इसके बाद फिर मैंने ना एक नया आगाज़ शुरू किया, एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में काम शुरू किया। फॉर सम रीज़न जो मेरा ओनर था, he was Jordanian Muslim, God bless him। रियल टर्निंग पॉइंट ये था कि उसने मेरा हाथ थाम लिया और थोड़ा सा मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। कभी जहन में नहीं उस वक़्त आया कि क्यों उस आदमी ने मुझे ही पिक किया। उसके पास तकरीबन 1200 एम्प्लॉइज़ थे। Why did he really pick me? I never knew until like 2002। 5 साल इतनी मेहनत की कि मैंने अपनी एक कंपनी बनाई
कंपनी बना के उसमें मैंने अपने आदमी शुरू हो गए काम क्या करने। कंपनी बनाई आपने? कोरियर कंपनी बनाई। अच्छा, कोरियर कंपनी बनाई। फिर 2001 में गैस स्टेशन भी साथ ले लिया। आई ऑलवेज बिलीव्ड ऑन डिवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी में यही होता है कि आदमी चलो एक तरफ से कुछ आ रहा है या दूसरी तरफ से कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ आता रहता है। एंड that's the way basically you want to grow. You don't want to lay all your eggs in one basket. अच्छा, तो 2012 में he passed away. That was heartbroken for you, of course. It was very heartbroken. बस अल्लाह ताला की मर्जी है। सुबह मेरी बात हो रही है, 11 बजे के करीब बात हुई है और 2 बजे फ़ोन आ गया कि he collapsed and 3:30 बजे उसकी डेथ हो गई। So that was very disappointing day for me. Obviously माँ बाप का भी दुख होता है, पर इसका भी उतना ही दुख है जो मेरे मौसन है, पूरी कंपनी आपके नाम कर दी, जो मेरे मौसन है। जो लेकिन सर ये जो आप फास्ट फूड में आपका टर्निंग पॉइंट है, वो कहाँ से उसका आगाज हुआ? वो कैसे आप, आई नो कोरियर कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, गैस स्टेशन। हुआ ये कि 2004 में मैं सऊदी अरब गया हज करने। वहाँ पे मैंने देखा हार्डीज का लोगो लगा हुआ। सो बीइंग लिविंग इन द वेस्ट साइड ऑफ इट, दे आर नोन एज कार्ल्स जूनियर ओवर देयर, एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि ये कार्ल्स जूनियर का लोगो हार्डीज ने कैसे लगाया। So when I came back, I started searching, and then I come to find out basically on the west side they are known as Carl's Jr. and the east side they are known as Hardee's. You know, at the back end there is only one company. One company. उस चीज़ से ना मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि let's go for the fast food, कुछ किया जाए फास्ट फूड में, क्योंकि गैस स्टेशंस में उन दिनों में ना वो कुछ इतना बन नहीं रहा था कुछ। ऑयल के ऊपर प्राइस भी डाउन के ऊपर, तो वो उसमें ना इतना प्रॉफिट शुरू में था, लेकिन फिर रेगुलेशन काफ़ी, स्पेशली बीइंग इन कैलिफोर्निया, द गैस इंडस्ट्री इज वेरी रेगुलेटेड। तो इन्हीं चीज़ों में ना सोचते ना कार्ल जूनियर का अप्लाई किया। देयर वाज नो होप। देन आई अप्लाइड फॉर द KFC टू बिकम देयर फ्रेंचाइजी। आई न्यू फ्यू फोक्स since I had worked over there, and they had processed my application in an expedited manner. So जैसे वो expedite हुई, within like 2 months, I was an approved franchisee. अब इससे अप्रूव होना था, वो हो गया। अब इससे बड़ा ऑब्स्टिकल ये था कि जी कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, तो कैलिफोर्निया में इतनी जगह नहीं है कि आप बना सको। It was very saturated already. तो वहाँ पे बहुत थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज थी। तो I approached back KFC, I need to go somewhere else. Are you willing to move? Of course I can if there is an opportunity. So the first opportunity came in was in Houston. I still remember the day. It was June of 2005 when I landed. And you can imagine living in San Francisco for almost your whole life. And you come to Houston, especially in the month of June, it's so hot and humid. You feel like that you are really being steamed. For some reason, I really liked it, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा सा सियालकोट का मिलता जुलता पाकिस्तान से मिलता जुलता है। Beside even the weather, I had one thing in my mind. I need to do something. कि गैस स्टेशन तो नहीं है, so where is my diversification? I never wanted to end up staying in the courier side of it only. In the meantime, हुआ ये भी था कि 2004 में फेडरल गवर्नमेंट ने चेक प्रोसेसिंग का जो ना सिस्टम ही चेंज कर दिया, एंड दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट। प्रेडिक्शन वाज द कोरियर इंडस्ट्री विल फेड इन अबाउट नेक्स्ट 5 to 7 years, and you can cash it as long as you can. However, one day definitely it will be obsolete. तो वो भी एक थोड़ा सा फियर था कि जल्दी कुछ करना है। तो ह्यूस्टन में अपॉर्चुनिटीज जब नज़र आई तो वेदर वाज नॉट द प्रायोरिटी। द प्रायोरिटी अगेन वाज द गोल। हाउ डू आई अचीव द गोल? फर्स्ट गोल बेसिकली वाज कि नेक्स्ट 5 years आई नीड टू हैव अबाउट 10 stores. Keeping that in mind, we opened our first store in Spring, Texas on April 26, 2006.
followed by another one in November of 2006. तो इस तरीके से थोड़ी जर्नी शुरू हो गई। हर साल 2-3 बनाते रहे। अब सबसे अच्छी बात ये हुई कि early part of my career I had worked in the fast food. I knew all the obstacles of HR directors and all that. Besides the obstacles, I always had one thing in my mind कि ना जो एक manager है, they are the one actually running the show for you. They are the #1 leaders in your restaurant. So what kind of difficulties do they face? How can I minimize? You cannot eliminate all these difficulties, you know, you can minimize it. तो वो सारी जो memories थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आनी शुरू हुई, and I tried my level best to create such an infrastructure which offered a lot of comfort and a lot of incentives for the managers. The biggest thing in the restaurant industry is how do you really control the turnover? अगर आपने turnover control कर लिया तो आप you can make money. अगर आप turnover ही control नहीं कर सके, then there is no way you can be successful. How do you explain turnover to my audience? The best thing is कि आप ये देखें कि वो managers को कौन सी problems है, उसको eliminate करें. Obviously the money is a big factor, so I will talk a little bit about the money later. The first thing is, can you really provide a safer and working environment where the managers will love to come to work? It's not a burden to them कि ना ये मुझे आज जाना ही जाना है, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ. I don't want that attitude. I want to make sure that, you know, when he wakes up, all right, I'm ready to go. मुझे जाके काम करना है, कोई भी difficulty या कोई कुछ भी है, मुझे जाके करना है. Then the second part is कि उनको incentives क्या है. Incentives क्या है, benefits क्या है. तो मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि इनको इस तरीके से इंसेंटिव किया जाए कि एक तो मार्केट से थोड़े से पैसे ज़्यादा दिए जाए. फिर उनका जो बोनस स्ट्रक्चर था, what I had faced problem कि ना वो क्वार्टरली बोनस होता था. The last part of the quarter sometimes, you know, you failed one inspection और आपका almost 80% बोनस खत्म हो जाता था. तो मैंने ना कुछ 5 कैटेगरीज चुन के I made their bonus structure to be paid bi-weekly. So every check, they're looking forward to get something extra beside their salary. Obviously, they are making a lot of salary. However, when they see this additional money being put on the check every 2 weeks, that was a motivation for them. तो उस चीज़ को लेके मैनेजर्स ने ना वो उनका एक एटीट्यूड चेंज हुआ, उनकी एक वर्किंग एनवायरनमेंट थिंकिंग चेंज हो गई, एक माइंडसेट चेंज हो गया. तो जब आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है ना, इफ़ यू कैन चेंज देयर माइंडसेट एंड हैव देम फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स, दैट इज द की ऑफ योर सक्सेस, राइट. And then it comes with your lot of processes and tools कि आप उनको किस तरीके से कौन से tools उनको provide करते हैं. How do you really set up the above store team? कि जो आपकी chain of command है, how do they approach? Are you easily accessible? तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए ना मैंने टीम तैयार की अपनी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते गए. तो चलिए 2008 में up and from 2000 basically 7 में मैं इधर मूव हो गया ह्यूस्टन कैलिफोर्निया को छोड़ के. 2008 के एंड तक अपने घर से ही ऑफिस बनाया हुआ है. तो ऑफिस स्टाफ जो था तो 3 औरतें घर पे ही आती हैं, काम करती हैं. तो then I thought one day यार कि if I really need to be big, I need to start thinking big. Big things only happen when you think big. अगर आप छोटा छोटा सोचते रहोगे तो आप छोटे ही रहोगे. Believe it or not, at that time I only had about 15 restaurants. That time. So you grown fast. Yeah, I grew very fast. तो 15 रेस्टोरेंट थे. तो 15 रेस्टोरेंट पे most of the franchisees they are operating from their home. मैंने 20,000 स्क्वायर फीट की पूरी बिल्डिंग खरीद ली. And then I renovated it very nicely, very professionally. एक चीज़ मेरे जहन में थी, which I had learned in the courier business, कि
if you need to get a loan, you need to move forward and you need to grow, you need to invite bankers in your office. You need to show them, you need to sell yourself. If you are able to sell yourself to the bankers, the whole world is in your hand. Once I was able to convince all the bankers, it became so easy. In 2010, I bought 18 restaurants in Dallas from company. In June of 2011, I bought another 11 restaurants in El Paso. Right after buying the El Paso market, one of the person actually that I used to report to at KFC, who was my franchise business coach, all of a sudden he called me one day and said, "How do you get your financing done?" And instead of answering him, I jumped to the conclusion. I said, "What is it that you are looking for?" He said, "Well, no, tell me." I said, no. It doesn't work like that. You tell me what exactly are you looking for. So he said, "Well, there is a deal here in Arizona, and corporate is looking for someone to buy this market. However, they don't have that much time." I said, "Bring the deal to me. I'll buy it in 6 weeks." So obviously he got shocked. He said, "You really? Really?" I said, "Yes." Then he brought the deal to me. And there were 47 restaurants, and believe it or not, in 5 weeks, I bought them. So that was a huge jump. Huge jump. No. And I earned my respect at the corporate level too. And then in 2012, I bought another 23 restaurants in Vegas. So currently, I own 26 restaurants actually in Vegas. So we built 3 new restaurants over there. So I own 100% Phoenix, El Paso, Tucson, and Vegas markets for KFC. Houston, partially, Dallas, partially. At this moment, I have 139 restaurants, over 2,700 employees working for me. I'm very, very grateful and thankful to Allah that He has given me so much success. I always wonder whether it is my honesty, my loyalty, my parents' prayers, family support, that वो एक खिचड़ी सी बन के ना मेरे अंदर भर गई है। जैसा मसला पता है क्या है, आपकी ये जो फर्स्ट रेस्टोरेंट आपने बाई किया, ठीक है, उससे आपने 2008 में आपके पास 15 हो गए, 15 हो गए. दैट्स अ वेरी बिग सक्सेस. I mean, unbelievable. अच्छा, beside that, ये जो प्रॉपर्टी है, somebody asked me, what is the McDonald's? मैंने कहा McDonald's is a real estate company because they own all the property. They make more money in real estate than the burger. I agree with you totally. In restaurant industry, if you really want to be successful and you do not have any exit strategy, you gotta have the properties owned. Otherwise, आप जो रेंट कर रहे हो, लीज कर रहे हो, रेंट तो बढ़ता ही रहेगा ना. आप लोन भी लेते हो प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो एक दिन पेड ऑफ हो ही जाता है. बिल्कुल. ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ रेंट ही करते रहे हो, तो रेंट बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम कम होती जाएगी. जैसे ही आपका एक दिन लोन पेड ऑफ हो गया, आपका कैश फ्लो it could be quadrupled, depending on the value of the property at that time. And you can always retire handsomely, business बेच सकते हो और आप लैंडलॉर्ड बन सकते हो. तो मैंने जो कोशिश शुरू से यही की कि मैं जो most of the restaurants that I purchase, I want to own them. Property, you own the property. I own the property. And the location, definitely. And alhamdulillah, I think at my size right now, I'm probably the only franchisee in the entire country who owns the most properties. 2009 में I launched an energy company. Texas is a deregulated market. So I thought I have so many restaurants, so why not even start up the own energy company and provide electricity to my own restaurants. So that was the first thing again came to my mind. Going back to my
mentality and philosophy. What is in it for me? How do I really maximize my profit and how do I minimize my cost? Having that kind of a mindset, and one day I was just looking at the P&Ls and I said, you know what, the biggest expense here is the utilities. Yeah. That's how I ended up launching the company. So alhamdulillah, we have about close to over 10,000 customers right now. And we are in 5 different states. डेफिनेटली नाज़रीन को ये यानी कि सोच रहे होंगे, देखने वाले हैं कि आपने इतनी जल्दी जो कामयाबी हासिल की, डेफिनेटली आपका उसमें तजर्बा और आपकी सोच और आपकी फीलिंग और आपकी डिटर्मिनेशन उसमें थी, ठीक है। और जैसे आप कह रहे हैं कि यू हैव अ गोल टू गो ओवरसीज एज वेल इंशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन में आपने अपने स्टोर बनाए, उससे आपने सीखा, फिर आपने दूसरे स्टोर बनाना शुरू कर दिए। तो माशाल्लाह आप 3 एंगल पे जा रहे हैं, अपना फास्ट फूड, एनर्जी एंड द कंस्ट्रक्शन। इज एनी अदर आइडिया इन योर माइंड फ्यूचर? I'm working on a few other projects already. They are in the pipeline, which I think it is not feasible for me to disclose. Okay, so they are in the pipeline right now. अच्छा। I came to this country empty-handed, and alhamdulillah, with the grace of Allah, I am where I am today, and that is because of this country. Working with Americans is much easier than working with our own local people, own community, whether we are in US or in Pakistan. You know the conditions back home and here as well. निफ्टी क्या आपके बारे में सोचती है, क्या फीलिंग है? इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन है, यंग कॉर्पोरेशन, उसके जो CEOs हैं, उसकी मैनेजमेंट इंतजामिया आपको किस आई से देखती है? I think I'm probably the most respected person in the entire country. पिछले 3 साल से consecutively I've been nominated Operator of the Year, #1 operator in the entire country. तो उस चीज़ के हिसाब से like I said, I'm very well respected in the company. तनवीर साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, सियालकोट से, तो पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या फीलिंग है? हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और क्या उसका मुस्तकबिल हो सकता है? मुस्तकबिल तो दुआ तो यही रहती है, अच्छा हो, अपना मुल्क है, अपना मुल्क है, तरक्की करे, लोगों को भी वहाँ पे खुशहाली मिले। अगर वहाँ पे लोगों को खुशहाली मिलेगी तो मेरे जैसे लोग वहाँ पे रह के भी मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे पीस हो, अमन हो, पीस अमन हो, वहाँ पे मोस्टली जो है ना वो इंसाफ की बात है, इंसाफ हो। हाँ, अगर आप ये पीस अमन तो खैर आ ही जाएगा, लेकिन इंसाफ जब तक वहाँ पे ना हो, तो इन माई हम्बल ओपिनियन पाकिस्तान गवर्नमेंट को 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। दे नीड टू रियली फोकस ऑन द एजुकेशन, ठीक है। दूसरा, दे नीड टू रियली फिक्स द जुडिशरी सिस्टम, कि जो हमारा जस्टिस डिपार्टमेंट है ना, इट्स इन वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट राइट नाउ, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है, हमारी जो पुलिस है, बेसिकली उनका सिस्टम करना चाहिए, उनमें एक बैलेंस आना चाहिए। तो अगर ये 3 चीज़ें हमारे मुल्क में आज हो जाएं, आई गारंटी यू इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 5 years, पाकिस्तान विल बी शाइनिंग स्टार। तनवीर साहब, अभी आप रिसेंटली फर्स्ट लेडी से मिले। फर्स्ट लेडी इज हस्बैंड ऑफ द प्रेसिडेंट, शी इज द फर्स्ट लेडी सेनेटर एंड सेक्रेटरी स्टेट हिली क्लिंटन। कभी मुलाकात हुई आपकी वजह से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर? आपकी फीलिंग क्या थी जब आपने शेक हैंड किया? Honestly, I mean, I was very proud कि एक छोटा सा बच्चा कहाँ सियालकोट के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ है और आज फ्यूचर के प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहा है। ऑब्वियसली एक दिली तो खुशी होती है, यू नो। तो फिर पहले यही चीज़ निकली ना कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं इस वक्त इस जगह पे खड़ा हूँ और किन लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। तनवीर साहब, माशाल्लाह आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प रही, आपने जो बातें बताई, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को आपकी बातों से आज काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। थैंक यू सर। खुसूसन वो लोग जो प्लान कर रहे हैं फास्ट फूड में जाने के, और वो लोग जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को कोई खुसूसी पैगाम दें। आज हमारे वो लोग जो आज अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में आपको देख रहे हैं, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान,
सब शामिल है। और वो मालूम करना चाहते हैं कि इंस्पायर होना चाहते हैं कि जी इफ़ तनवीर कैन डू कैन बी डू। एनीवन कैन डू इट। अगर आप मेहनत करते हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप में डेडिकेशन है, ये चीज़ों सारी बहुत एक बुनियादी चीज़ें हैं। अगर आप इन्हीं पे फोकस करते हैं, इफ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। नाइस मीटिंग यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग। तो आइए तनवीर साहब के बच्चों से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि वो अपने अब्बू के बारे में क्या ख्याल रखते हैं जो इतनी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपने अब्बू को बचपन से देखा है जी, तो अब अपने अब्बू के बारे में अपने किन ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं? कि वो हार्ड वर्कर है, अगर कुछ काम करना है खुद करते हैं, दूसरा करे लाइने करते हैं। मैं तो डैडी के साथ काम करना चाहता हूँ, डैडी तो इतने अच्छे हैं। अच्छा, आप डैडी के साथ काम करना चाहते हैं? अच्छा, अभी आपकी एज क्या है? मैं 12 हूँ। हाँ, तो आप लीगली अलाउ नहीं है ना, आप यू हैव टू वेट 4 more years। जब मैं ओल्ड इनफ हो जाऊँगा फिर डैडी के साथ काम करूँगा। अच्छा, you gonna be number 2, you want to be, you're smart, huh? You want to be like a number 2 of the company, that's right? जी। जबरदस्त। ओके, अब्बू की सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है आपको? जो काम करते हैं, किसी को तंग नहीं करते, वो अच्छा इंडिपेंडेंट है, सब कुछ खुद करते हैं। डैडी का यही है कि हमेशा हमारी टेक केयर करते हैं। ये मनी इज़ नेवर एन इशू, ही विल टेक केयर ऑफ अस नो मैटर व्हाट। सबसे अच्छी क्या बात लगी जो उन्होंने इतनी तरक्की की, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट और फैमिली ओरिएंटेड एज वेल। उन्होंने हमको स्पॉइल नहीं किया, जो हमको चीज़ें मिल रही हैं वैसे जान ज़्यादा नहीं दी, जैसे हम फिर भी खुद ट्राई करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिर उन्होंने सब कुछ हमको दिया नहीं, फिर भी हमको ट्राई करना है, हमने खुद करना है। ये नहीं है डैडी हमको सब कुछ दे देंगे, मनी दे देंगे, बिजनेस दे देंगे, हमको फिर भी खुद करना पड़ना है। अच्छा, ये आपको अपने अब्बू की बात पसंद है? हाँ, वो जो एम्बिशन जो खुद जाके जो करना होता है कर लेते हैं। Wonderful, man. Very helpful. Pretty much, actually, we all have. We have a full team. And I'm very excited and very delighted to be at headquarters today. It really look like a true corporate of America, and that's the way we are supposed to do the business in America: organize, articulate, and give a statement. So today I have an office, Diana and Rubo. Diana is HR, which is the backbone of the company, and of course the finance is also the backbone of the company. So to individual here, let's talk about what they have a message or a statement about Mr. Tanweer Ahmed. I'll start with Diane. Diane, how are you? I'm fine, how are you? Fine, fine. He has been a owner slash boss that has a vision that he has set forth for all of us to accomplish. And so he has given us the tools that we need to be successful. And I think that's why he's successful, because he has the backbone of us to help him along the way. So his personality is express, driver is personality. How do you rate His it? hard work, his perseverance, his determination, his commitment to the company. And he's a man who express personality, jump and reaches to destination. Yes, he pushes us to reach our destination. He pushes us to reach our potential in us. And so that's how we be successful. So how do you see his future and future of your company? Oh, his future is bright. I mean, you can tell already. Where I am today is just because of him. That's his leadership. He's an inspiration. He's just someone I look up to, and I want to be like him one day. So he's just a wonderful guy, and he's just inspiration to young people like us. What you have seen the best out of Mr. Tanweer Ahmed? We have seen the best is just like the tremendous growth in last 4 years. When I came, we were not this big, but now we are renowned. We are one of the top operating franchises in the United States. Everybody knows what Pack Foods is. So I've seen that growth from since 2011 to 2015. Hi, I am Carla Correll, and I am very proud to be part of the Pack Foods team as an head coach. I like the structure that we have to be able to grow our careers and to help others promote within. One of the things that Tanweer does for us to be able to build our knowledge in our business and become better leaders, he meets with us once a month to review our PDRs.
Thanks to that, I'm able to hit my goals and my targets. That makes me feel very proud. At the same time, Tanweer has always discussed his vision to be able to provide to his top performers a once-in-a-lifetime trip, which is been to Europe. I've been very grateful to be able to be part of that 2 years in a row. Thanks to all the help that I have gone from the company and for the invested time in me, I feel that now I can become a better leader for my restaurant. I have been a franchisee for about 5 years now, and one of my partners is Tanweer Ahmed. We have known each other for about 10 years, and we met when we were working together in the KFC business. I actually used to work for the Young Brands Corporation and had the opportunity to be the general manager for one of the KFC territories. At that time, I was able to meet Tanweer. He was a franchisee in Houston, Texas, and we started a relationship that went beyond the business transaction that we were interacting with. We ended up being good friends, and over time became close partners. In 2010, we got an opportunity from Pizza Hut to buy some stores in the Dallas area, and Tanweer was gracious enough to partner with me, and we ended up buying 18 stores at the end of 2010. Since then, we have grown the business, and our franchise is actually one of the top franchises in the Pizza Hut system. Tanweer brought to us not only the financial background, but a significant amount of experience being a franchisee himself with over 100 stores in the KFC system. We have developed a bond that goes beyond a friendship. We're part of a family now. नाज़रीन, जब आप जानते हैं कि लास वेगस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट नेवाडा, और लास वेगस में कौन सा ऐसा शख्स नहीं है जो वहाँ नहीं जाता हो। दुनिया के बड़े बड़े शोज वहाँ होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम वहाँ होते हैं। ऑफ कोर्स इज अ सिन सिटी, इज अ लाइट सिटी, लेकिन ये बता चलूँ कि उस महंगे तरीन शहर में ईच एंड एवरी KFC ओन बाय तनवीर अहमद। Hi, my name is Juan Castañeda. I'm the senior region coach for some of the restaurants in Tanweer's organization. I met Tanweer back in 2011, and since the day I met Tanweer, I knew that he was a great businessman, a great person with great values that really are the foundation of his company, and also with a great vision and great skills. Tanweer is someone that has achieved the American dream. So Tanweer is not only a visionary, but he's extremely hardworking. You know, again, he came to this country with nothing in his pocket. He made this huge organization, 104 KFCs, and he gives opportunities to everybody, from myself to everybody in the company, promotes people within, and we grow as a family. I truly believe in Tanweer's vision and in his hard work, and we're going to continue to grow. I love working for him. He's a very family-oriented guy. He treats people like family, and he wants people to be successful. Hi, I'm David Wehrman. I'm the Chief Operations Officer at Pack Foods. I first met Tanweer in about 2008 as a representative for KFCC. I met Tanweer and got to know who he was as a businessman, but also as a friend. I stayed in contact with him, and in 2011, we had an opportunity to partner together, and I got to really know what not only a good person he was, but also his business sense. He has a passion, a huge passion for this business, and because of his passion, because of his vision, he's been able to grow this company. But what's more important about Tanweer
is that his vision is also to bring in the best people. And because he treats people like they're part of his family, we've been able to grow this company to where it is today. नाज़रीन, तो अभी मेरी बातचीत हो रही थी जनाब तनवीर अहमद साहब से, तफसील से गुफ्तगू हुई, सैर हासिल बातें हुई, काम की बातें हुई। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अमेरिका में कामयाबी के रास्ते क्या है और कैसे इंसान कामयाबी की मंजिल को छू सकता है। होराइजन ट्रैवल मुकम्मल ट्रैवल टूर पैकेज, जाना कल हो या आज और लास्ट मिनट ट्रैवलिंग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, गल्फ और मिडिल ईस्ट, दुनिया भर में सफरी सहूलतों के चैंपियन। हज हो या उम्रा, ज़ियारत हो या प्यारों से मिलना, सिर्फ एक ही नाम लबों पे है आम। ऑल एयरलाइंस, ऑल पैकेज, मुनासिब दाम में बहुत बड़ा नाम, होराइजन ट्रैवल। ज़हीर भाई से आज ही राब्ता कायम कीजिए। अजीम शान मेलोडियस कॉन्सर्ट, रूम में समा जाने वाली आवाज नईम अब्बास रूफी। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तुझे तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, जरा दिल किसी से लगा ट्रिब्यूट टू नुसरत फतेह अली खान, आवाज की मलका तरन्नुम नाज। ट्रिब्यूट टू नूर जहां, निहायत ही खूबसूरत बैंक्वेट हॉल में वीआईपी अंदाज, पेशकश सफीर पाकिस्तान और रेड चिली के शहजाद के साथ एक पुरवकार और रंगीन शाम। 13 दिसंबर बरोज इतवार, स्प्रिंगफील्ड हॉल, चैपमैन और हर्बर के कॉर्नर में, जस्ट लाइक अ व्हाइट हाउस। खुली डुली पार्किंग, वीवीआईपी 100, 50 और जनरल $35। आज ही कॉन्टेक्ट करें, सीट्स आर लिमिटेड। Shri Balaji Entertainment presents Rockstar Atif Aslam, call 310-889-5158 201-805-9426। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे तनवीर अहमद से मुलाकात। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इम्प्रेस हुए होंगे और देखा होगा उन्होंने कितनी जल्दी तेजी से तरक्की की और कहां से कहां तक पहुंचे, कहां गए। 9/11 के बाद भी इनका ग्राफ आगे बढ़ता रहा। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो हर शख्स को पनाह देता है, हर शख्स को इजाजत देता है, चाहे उसका मजहब कोई सा भी हो, किसी मजहब से हो, किसी कलर से हो। ये मुल्क आपको तरक्की की राह फराहम करता है और आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। दिस इज ओनली वन कंट्री इन द होल वर्ल्ड, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेजबान वकील खान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान, फैज़ाबाद।